Hello students, welcome back to Arman Educational Tutorials. How are you all? I hope you're all fine and doing well by the God grace. Students, I have prepared easy and short summary with good images in both the languages Hindi as well as in English so that you can easily remember and write well in the examination. So watch the video till the end for Hindi explanation and also for written summary. Today we are going to discuss a poem titled As I Grew Older by Langston Hughes. Before starting the lesson, let's learn about the author Langston Hughes. He was born in 1902 and died in 1967 and was a leading writer and thinker of the Renaissance. The African American artistic movement of the 1920s that celebrated African American life and culture. He started writing at a young age and rose to fame with his poetry collections The Very Blues in 1926 and The Fine Clothes to the Jeeves in 1927. An early inventor of jazz poetry, Hughes condemned racism, promoted equality, and celebrated African American life, culture, and spirituality through his poetry, novels, plays, and essays. He is considered to be a titanic figure in 20th century American literature. The poem is about the poet's inability to achieve his dream due to racial discrimination and prejudice. He was a famous African American poet. In the poem, As I Grew Older, expresses pressure and fighting against it. Back in the 1900s, racism was prevalent in society and prevented blacks to achieve their dreams and letting them believe they didn't have chance. The poem is about inability to achieve childhood dreams because of racism and prejudice. When the speaker was young, he had dreamed of achieving great things. But as he grew up, he experienced prejudice and racial discrimination because of skin color. His dreams are shattered as he grows up in America. Langston Hughes was an African American who grew in America. He fought for racial equality and he spoke for African American who lived in America at that time. In the poem, the speaker and the poet probably the same person. The poem's comment is not only on racial discrimination but on any form of oppression that makes people unable to fulfill their dreams, whether it is because of age, gender, nationality, or religion. The poet implies that when a person's potential or his or her worth as a human being is ignored, it is a global loss. The poem is also suggests the people must believe in themselves and stand up for themselves. Although the poem is aimed at the African American community, lesson is universal, appealing to all of us. Even if the odds are against you, you can be resourceful and use your inner strength to change your circumstances and reach your dreams. The message of the poem is not to be afraid to break the walls in your life which prevent you from your achieving your dream. In conclusion, in this poem, Langston Hughes shows us in his life he fought against racism which constituted the obstacles in his life. स्वागत है आप सबका अरमान एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्गस्टन ह्यूज की पोएम एज ए ग्रो ओल्डर, जो कि एक इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल पोएम है जो कि रेसिज्म पे बेस्ड है। रेसिज्म मीन्स जातिवाद और भेदभाव। स्टूडेंट्स, इस कविता में, इस पोएट्री में राइटर खुद एक स्पीकर है, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में दर्शा रहे हैं। लॉन्गस्टन ह्यूज एक अफ्रीकन अमेरिकन पोएट थे, वो एक निग्रो थे, जिसकी वजह से उन्हें ज़िंदगी में बहुत ही बुरे परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वे अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताना चाह रहे हैं कि जब वे छोटे थे और जब वो बड़े हुए किस तरह के चेंजेस आए हैं। स्टूडेंट्स, पोएम में लॉन्ग टाइम अगो का मतलब ये है कि वो अपनी ज़िंदगी का हर एक्सपीरियंस का खुलासा करके बताना चाह रहे हैं कि जब वो छोटे थे, ये तब की बात है, मतलब बहुत पहले की बात है। जब ये पोएम लिखे होंगे तो वो बड़े
40 साल के हो चुके होंगे। जब वे छोटे थे उनका एक सपना हुआ करता था, जो कि चाहे वो पोयम लिखने का हो या कुछ बनने का हो। और कह रहे कि उनका सपना बहुत ही क्लियर था, उज्जवल था, साफ था, जैसे कि सूरज। उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं था कि वे क्या बनना चाहते थे, क्योंकि बच्चों को जातिवादी भेदभाव के बारे में कुछ पता नहीं होता। वो आसानी से सपना तो देख लेते हैं, लेकिन जब वे बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि वो एक निग्रो है और अमेरिका में निग्रोस के राइट्स गोरों के बराबर नहीं हैं, कि निग्रोस अपने सपने पूरे नहीं कर सकते हैं, वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं, उनके राइट्स कुछ अलग हैं, वो पब्लिक प्लेसेस में गोरों के साथ शामिल नहीं हो सकते हैं, वे अपनी एजुकेशन और करियर को फॉलो नहीं कर सकते हैं, और पब्लिक बसेस में गोरों के साथ नहीं बैठ सकते हैं, और एक ही हॉस्पिटल में नहीं दिखा सकते हैं। और गलती से कभी इमरजेंसी आ पड़ी हो, कोई सीरियस हो, या सेम हॉस्पिटल में दिखाने जाना पड़ा हो, या सेम बस में ट्रैवल करना पड़ा, या पब्लिक प्लेसेस में दिख भी गए, तो वो गोरे लोग कालों को, नेग्रोस को लाठी और पत्थर मारकर वहाँ से खूना खून कर देते थे। अब वे समझ चुके थे कि ये सब जातिवादी भेदभाव, रेसिज्म उनके और उनके सपनों के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार बन चुकी थी, जो कि आसमान को छू गई। जो सपना बचपन में सूरज की तरह क्लियर था, अब वो एक शैडो बन चुकी थी। अब वो सिर्फ एक परछाई बनकर रह गई। वे कहना चाह रहे कि वे निग्रो है और वे ब्लैक है। वे औरों की तरह, गोरों की तरह समान नहीं है, और वो उनकी तरह अपना सपना पूरा नहीं कर सके, चाहे वो कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। वे हताश हो गए और वे कह रहे हैं कि वे ज़मीन पर लेट गए हैं। अब वो अपना सपना ना मेरे आगे है ना मेरे पीछे, अब जो मेरे सामने है वो बहुत बड़ी दीवार है, जो कि निग्रोस की लिमिटेशन बताती हैं। स्टूडेंट्स, माय डार्क हैंड्स का मतलब जो है, मेरी पहचान मेरे ब्लैक हैंड्स है, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वे नेग्रो हैं, और ये दीवार उनके सपनों को साकार करने में बहुत बड़ी रुकावट बन गई थी। लेकिन अब वे अपने आप से कह रहे हैं कि मुझे इस दीवार को गिराना है और मेरे सपने को देखना है, और अपने हाथों को कह रहे हैं कि इस दीवार को गिरा दो और शैडो को हटा दो। जब वॉल गिर जाएगी तो सूरज दिखने लगेगा, और मेरे आगे 1000 वर्लिंग मीन्स हज़ारों सपने दिखने लगेंगे। स्टूडेंट्स, ये पोएम अफ्रीकन अमेरिकन निग्रो पर हुए अत्याचार के बारे में बताता है। स्टूडेंट्स, ये पोएम ज़िंदगी में हर परिस्थिति में अपने सपनों को पूरा करने का साहस देती है, चाहे वो लड़का लड़की की डिस्क्रिमिनेशन हो, जातिवादी भेदभाव का डिस्क्रिमिनेशन हो, रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन हो, या नेशनैलिटी का डिस्क्रिमिनेशन हो। अपने सामने की जो दीवार, रुकावटें, जो ऑब्स्टिकल्स है, उसको गिरा के सपना पूरा करने का साहस, हिम्मत देती हैं। तो बच्चों, अपना सपना कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे कितनी परिस्थितियाँ विपरीत क्यों ना हो। और बड़ों को भी बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए उनका सपना पूरा करने में, ताकि वो खुल के बड़ों के आशीर्वाद के साथ अपना सपना पूरा कर सके। उनकी जो क्रिएटिविटी थी उसकी वजह से उन्होंने कुछ डिस्क्रिमिनेशन कम किया। Students, now I am going to explain you the summary of the poetry. Listen carefully, take your pen and paper and note down, which will be helpful you to write down in examination. Let's start the summary. Langston Hughes, born in 1902 and died in 1967, was a great African American poet, writer, novelist, dramatist, and essayist. He condemned racism and promoted equality in all his writings. In the present poem, As I Grew Older, in 1925, Hughes describes the discrimination he faces as an African American person in America. The poem is about the dreams that the poet was unable to achieve because of racial subjection and discrimination. The poet, in his childhood, had dreams, but as time passed and he grew up, he was subjected to racial prejudice and oppression. The poet says his dream, bright as the sun,
was right in front of him until a wall rose between him and his dream. The poet wants to break the wall and shatter the darkness that is keeping him from attending his dream. He wants to break the shadow into thousand lights of sun and thousand of whirling dreams. The poet is black and he himself makes reference to his dark hands. The words light symbolizes dreams, hopes, and optimism, and darkness symbolizes prejudice, discrimination, and racism. Now, the poet is an old man and he is thinking about his unfulfilled dream in which a strong barrier was created by his fellow white American people. This poem gives a very good message that we should believe in ourselves and stand up against the unjust society and rise above any sort of discrimination. स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमें ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ही कम समय मिला क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स थे। तो स्टूडेंट्स कॉल करके कह रहे थे कि ये लेसन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आ रहा, आप एक्सप्लेन कीजिए। तो मुझे जल्दी जल्दी में ये वीडियो बनाना पड़ा। स्टूडेंट्स, एक दिन का समय बहुत ही कम होता है एडिटिंग के लिए, पिक्चर्स के लिए और 2 लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करने के लिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और लेसन समझ में आ गया होगा। इफ़ सो, शो योर लव बाय हिटिंग लाइक बटन, क्लिक द बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल, share with all your friends so that they can also learn, and don't forget to give your valuable feedback. And all the best to all of my viewers. God bless you. Have a nice day.